A disciplined mind leads to happiness and success, while an undisciplined mind leads to suffering. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today I am going to start a series on the jurisprudence. That is also one of the most important subject for the law students. Today in this video, I am going to start with the definition, nature and scope of jurisprudence. If we talk about the word jurisprudence, that is combination of two words, juris plus prudentia. Juris means law, prudentia means knowledge or the study. Means study relating to law is the jurisprudence. If we talk about the jurisprudence, like many other social sciences, the study of jurisprudence also started in Rome, and the word juris is taken from the Latin word jurisprudentia, which means knowledge of law, skill of law. But this meaning is vague and general. If we talk about the definition of jurisprudence, various jurists have defined the jurisprudence in their own words. It is a study relating to law, and the law is very closely connected with the society. And it is a society in which it has to play an important role. And Berger has rightly said that jurisprudence was the first social science to be born. And as we know, there is no society that can exist without law or without any jurisprudence. Since the social values and goals changes according to the changing needs of the society, and definition and nature of the scope are also changing. जैसे कि हम देखते हैं कि भी सोसाइटी चेंज हो रही है, तो सोसाइटी के साथ साथ कानून भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी तो एक चेंजिंग कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं टाइम के साथ चेंज होता रहता है। और जैसे जब सोसाइटी चेंज होती है तो इसके हिसाब से जो नए नए कानूनों का जन्म भी होता है। एंड सोशल वैल्यूज एंड गोल्स आर आल्सो चेंजिंग, और जैसे जैसे क्योंकि सोशल गोल्स या वैल्यू चेंज होंगे तो लॉ इज आल्सो चेंजिंग विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. So if we talk about the term jurisprudence, that is in its limited sense, that is the explanation of the general principles of law upon which the actual rule of law is based, and the jurisprudence is the science which impart knowledge about the law. In short, we can say that jurisprudence is the study relating to law. It is the study and systematic arrangement of the general principles of law. In judicial sense, law is considered as a body of rules of conduct, action, behavior, or person made and enforceable for the state, and it expresses the rule of human behavior, rule of human action. So if we talk about the word jurisprudence, that is defined by various jurists in the different words. इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग जूरिस्ट के द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई है. तो if we talk about certain definition, first definition is given by Austin. He was the first jurist who has given the definition of jurisprudence, that is definition that is known as positive definition, positive law. And as a science of positive law, Professor Austin defined the jurisprudence as the law is the command of sovereign. उन्होंने कैसे डिफाइन किया लॉ को? उसको ऑस्टिन के हिसाब से जो लॉ है, दैट इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, philosophy of positive law, and that is the law is the command of sovereign which obliges a person or the persons in their course of conduct. According to Austin, definition is very clear and simple, which defines validity of the law. According to Austin, jurisprudence can be divided into two classes. Jurisprudence जो है उन्होंने उनको दो भागों में डिवाइड किया. One is जनरल jurisprudence and another is specific jurisprudence. तो उन्होंने jurisprudence को दो भागों में डिवाइड किया. एक तो होता है जनरल jurisprudence और second one is specific jurisprudence. If we talk about the word general jurisprudence, that includes such ends of law which are common to all the systems, which particular jurisprudence in conformed only to study of only actual system of law or any portion of it. Austin classified the jurisprudence in general and particular, but which was criticized by the Salmon, Holland and other jurists. So this was about the definition of jurisprudence, that is according to Austin. If we talk about the definition of Professor Holland, Professor Holland ने कैसे डिफाइन किया था? Jurisprudence is the formal science of positive law. Jurisprudence is the formal science of positive law. That is the definition given by Professor Holland. He pointed out that it is the only material which is particular and not the science itself. And the study of particular legal system is not a science. His criticism is based on the assumption that law has the same characteristics
all over the world, but that is opposed to human experience. So this was all about the Professor Holland. If we talk about the next definition, that is definition given by Professor Salmon. Professor Salmon had defined the jurisprudence as the science of first principles of civil law. And the next definition is given by Professor Keaton. Professor Keaton has defined the jurisprudence as jurisprudence is the study and systematic arrangement of the general principles of law. That is the definition given by Professor Keaton. And the next definition that is given by Professor Ulpayan. Professor Ulpayan has defined the jurisprudence as the art of science. What is equitable and good? The observation of things, human and divine, knowledge of just and unjust. That is the definition of jurisprudence. And the next definition, that is the definition given by Professor Gray. Professor Gray has defined the jurisprudence as the science of law, the statement and systematic arrangement of rules followed by courts and principles involved in these rules. And the definition given by Professor Allen says that the scientific synthesis of the essential principles of law is the jurisprudence. And the Professor Hart had defined the jurisprudence in the following words. Jurisprudence is a science of law in a broader perspective by correlating law and the morality. These are the certain definitions which are given by the various jurists. ये वो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है जो प्रोफेसर अलग अलग जूरिस्ट के द्वारा दी गई है. If we talk about the Professor Salmon has made the distinction between the use of the term jurisprudence in general sense and the specific sense. जो सामन जी थे उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में डिवाइड किया था. एक होता है जनरल जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा होता है स्पेसिफिक. तो जनरल का मतलब उनसे किससे था? जनरल सेंस इट मींस इट इंक्लूड्स एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन्स, whereas the specific jurisprudence deals with a particular department of those doctrines. So taking the word jurisprudence in specific sense, Salmon divided the jurisprudence in three branches. सामन जी ने क्या करा? jurisprudence को तीन भागों में डिवाइड किया. जब हम स्पेसिफिक jurisprudence की बात करते हैं तो ये तीन भागों में डिवाइड होगा. एनालिटिकल jurisprudence, historical jurisprudence, and third one is ethical jurisprudence. Now the concept of jurisprudence has changed and depending upon the customs, usages, traditions of each community. तो these are the certain definitions which are given by certain jurists. ये definition आपको as it is लिखनी है क्योंकि definition को आपने changing नहीं करनी है. If we talk about the what nature of the jurisprudence, यदि हम nature की बात करते हैं jurisprudence की, तो जैसे कि हमें पता है कि जो nature है jurisprudence का, jurisprudence analyzes the concept relating to law, and he also seeks to figure out what the basic concept of law are. तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है? इट इज द स्टडी रिलेटिंग टू लॉ. यहाँ पे लॉ के बारे में जो स्टडी कर रहा है, यहाँ पे लॉ बता रहा है कि जो कानून है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या इसकी मतलब बेसिक कंसेप्ट है लॉ के. तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर डिस्कस किए जाते हैं. तो जब हम नेचर की बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की, तो जो जूरिस्प्रूडेंस है that is the only analysis of already defined the law but also analyzes the set of foundation of new rules. केवल वही रूल्स नहीं बताता जो पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नए रूल्स की फाउंडेशन के बारे में भी बताता है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जूरिस्ट, द फिलोसफिकल थॉट्स. they have the right in view, analyze the comment of the legal system. As such, it can be viewed as analytical exercise that doesn't have immediate practical application. It sets out the लेजिस्लेटिव चेंज, जो कानून के अंदर किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं. तो इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस, यदि नेचर की बात करते हैं तो इट विल अप्रोप्रिएट टू कॉल इट एज साइंस. हम इसको क्या कह सकते हैं? साइंस कह सकते हैं. क्यों? द रीजन इज दैट इट इज ए साइंस बिकॉज इन ए साइंस न्यू कंक्लूजन्स आर अराइव्ड एट through the collection, classification, and systematic study of various factors. Likewise, in jurisprudence, systematic study of human behavior in society and legal system adopted for the control over the society is done. So so we can say that jurisprudence is also a science, and jurisprudence is the study not of the law of one particular country but of the general notion of the law, and it is relating to those principles of law which are studied systematically in a scientific manner. So thus we can say that jurisprudence is the साइंस. इसलिए हम jurisprudence को एक साइंस का नाम दे सकते हैं
क्योंकि जब हम साइंस की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग जो कंक्लूजन्स, हम नए नए कंक्लूजन्स निकालते रहते हैं। सिमिलरली जब हम जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि नए नए कानून का कैसे जन्म हो रहा है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इस एक सिस्टमेटिक स्टडी ह्यूमन बिहेवियर की करते हैं कि सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर जैसे जैसे चेंज होता है उसके लिए नए नए कानूनों की जरूरत पड़ती है, और उस सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए किन किन कानूनों की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में स्टडी करना ही जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। स्कोप मतलब क्षेत्राधिकार, मतलब कहाँ तक सीमित है, इसके अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं आप। इफ यू टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो जो स्कोप है, इट्स द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैज वाइडन, क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे जो जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है, लॉ का जो स्कोप है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इट हैज टू बी डिफाइंड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। इट कांट ओवरलुक द सेवरल कॉन्फ्लिक्टिंग अप्रोचेस। अकॉर्डिंग टू समन, जूरिस्प्रूडेंस कैन बी स्टडीड इन थ्री सेंसेस। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जब देखोगे स्कोप की बात करते हो तो स्कोप के संबंध में आप क्या पढ़ेंगे कि जो डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप कैन नॉट बी एन एब्स्ट्रैक्ट एक्सरसाइज, इट हैज टू बी डिफाइंड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, and the scope of jurisprudence was limited to the study of concept of positive law and ethics. But now the scope of jurisprudence is not limited, it has widened for the years. According to Professor P.B. Mukherjee, jurisprudence is both an intellectual and idealistic abstract as well as behavioral study in the society. It includes positive, social, economical, and cultural ideals. It covers the study of man in relation to the society. Thus, there is clear distinction between the law and the jurisprudence. Jurisprudence comprises of the philosophy of law, and it objected not to discover the new rules, but to reflect the rules which are already known. According to Austin, he has tried to limit the scope of jurisprudence. भी जो ऑस्टिन जी थे उन्होंने jurisprudence के स्कोप को कहीं ना कहीं लिमिट करने की कोशिश की थी. He tried to segregate morals, theology from the study of jurisprudence. उन्होंने क्या करा कि jurisprudence की जो स्टडी थी उसके अंदर moral, theology, customs, traditions उनको बिल्कुल इससे अलग कर दिया, उन्होंने उसको कोई स्थान नहीं दिया. And the present view is that scope of jurisprudence cannot be circumscribed. इसको आप सर्कमस्क्राइब नहीं कर सकते, एक सर्कल के अंदर बंद नहीं कर सकते. इट इंक्लूड्स ऑल द कंसेप्ट रिलेटिंग टू द ह्यूमन ऑर्डर, ह्यूमन कंडक्ट इन द स्टेट. तो इफ वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दैट हैज वाइडन फॉर various years. तो जूरिस्प्रूडेंस इज बोथ द इंटेलेक्चुअल एज वेल एज आइडियलिस्टिक abstract study of the relating to the human behavior in the society. It includes political, social, economic, cultural ideals. It covers all the man's behavior in the society. It covers the society of man in relation to the state and the society. तो यहाँ पे आप जब देखते हो स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आप इसे लिमिट नहीं कर पाएंगे. ये आज के टाइम में बढ़ता ही जा रहा है एज द साइनिंग बट अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड गवर्न बाय रीजन्स. जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है कि एक तरह से मतलब एक अनफुलफिल्ड ड्रीम है जो मतलब पूरे जो कहीं ना कहीं जिसके पीछे रीजन काम करता है और उसके लिए नए नए कानूनों की जरूरत पड़ती ही रहती है. And the jurisprudence is a part of history. It is a part of economics. It is a part of sociology. It is a part of ethics. It is a part of philosophy of the law. And the jurisprudence is the big as law. It is as big as law, as told by Professor कार्ल जी के द्वारा ऐसा कहा गया था. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जूरिस्प्रूडेंस के जब स्कोप की बात करते हो तो इसको एक आप लिमिटेड एक सर्कमस्क्राइब नहीं कर पाएंगे. इसके लिए इसके अंदर आप हर तरह की स्टडी करते हैं. जो भी कहीं आप जो यहाँ पे आदमी का संबंध है सोसाइटी से उसके अंदर नए नए कानूनों की जरूरत पड़ती है उसके बारे में स्टडी करते रहते हैं. तो वो कहीं ना कहीं जो स्कोप है वो आज के टाइम में बढ़ता ही जा रहा है. एंड जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट स्टडी बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी. And jurisprudence is the study of law, not only of a particular notion, but of a general notion of the law. It relates to those principles of law which are studied systematically by the use of the scientific method. It can be said that intellectual exercise having no immediate practical application. It sets तो these are all about the scope of jurisprudence. If we talk about the importance of jurisprudence, यदि हम importance की बात करते हैं तो jurisprudence provides solution for all the multidimensional problems of the law. ये एक तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लॉ के रिलेटेड जो भी आती हैं उसके संबंध में ये पूरी की पूरी एक तरह से सोल्यूशन बताता है, उसका निष्कर्ष निकालता है कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए. तो इफ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ jurisprudence, that can be divided into various parts.
सच एज इट हेल्प्स ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है उसके अंदर ये स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहीं ना कहीं कार्य करता है। एंड जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट अबाउट द मेकिंग ऑफ न्यू रूल्स, rather than it focuses on the current rules in the structure. Its ideas will help lawyer to develop different, much better to procedure rules relating to the practicing lawyer, and it enhances the lawyer's ability to think logically. The next point is importance of jurisprudence. If we talk about the importance of jurisprudence, jurisprudence provides solutions for multidimensional problems of the law. Jurisprudence is not about making the new rules, rather than it focuses on the current values in the structure and jurisprudence. Its ideal will help lawyers to develop in different manner. Much better procedure, it provides much better procedure and rules while practicing. Thus it helps in overall development of the society. हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोसाइटी है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है. It enhances the lawyer's ability to think logically. It helps in the society. It helps in the study of actual rules of law and tracing out the principles underlying therein. This means jurisprudence can support the students too. It has to know their school's value. It helps in making the scientific development of the law. It develops the critical focuses. Jurisprudence is not focuses on the primary law but also addresses the social impact of those laws. And it is the theoretical basis of the new law. Without no practical application of the law is possible. And it helps a judge to have the clear concept of the subject matter of law. Jurisprudence helps in bringing the accuracy in legal reasoning. Jurisprudence trains the minds of lawyers, a law student, a legislator. It helps enables to discover the mistakes which would otherwise may not be noticed. According to Professor Lasky, jurisprudence is the eye of law, and it helps a person to understand the thoughts of law and its division. Jurisprudence is the grammar of law. It helps the person to understand the language and the grammar. And jurisprudence teaches a lawyer mind so that it can have proper knowledge, proper legal terminology and phrases. Jurisprudence provides the interpretation value, interpretation rules. It helps the judges and the lawyers to understand the importance of law passed by lawmakers. This means we can say that jurisprudence and its relationship with the other social sciences provides students how the law can be related and linked to other disciplines. And the jurisprudence teaches the people that the answer to a legal problem, what जो जितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या आंसर होना चाहिए. Jurisprudence also discusses the political legal rights and how the system can strive to balance them. पॉलिटिकल और लीगल राइट्स के बीच में क्या संबंध है और वहां पे उनको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, ये सब बातें कौन बता रहा है? जूरिस्प्रूडेंस बता रहा है. तो दस वी कैन से दैट जूरिस्प्रूडेंस की यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ले डाउन ए कंप्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ नेचर एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. तो यहाँ पे हमको एक डेफिनेशन वो नहीं दे सकते हैं. बट द सोसाइटी स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज असेंशियल टू बिकम ए गुड लॉयर एज इट इज द आइज ऑफ लॉ एंड फॉर इंटीग्रेटेड एंड सिस्टम synthetic understanding of the law, it is necessary to understand the jurisprudence from all the angles and from all the viewpoints. It is grammar of law as it throws light on the basic ideas and fundamental principles of law. So this is all about the jurisprudence, importance, nature and scope of jurisprudence. And in the next video I will discuss about the schools of jurisprudence. If you have any doubt, you are having any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.